I extend a very hearty and warm welcome to all of you all to Metamorphs. Metamorphs, as I always say, is a non-political, non-religious, non-profit organization which is trying to contribute in its own way to nation building and creating an environment which is required for our nation as of today. I had promised you all last time, but I'll be back on 27th February with a great and very interesting issue. And I am back here, and the issue that we are going to talk of today is 5G. Now this 5G, ladies and gentlemen, has actually become a very, very important thing. Everyone is talking about this 5G. But I'm afraid not many of us are very sure of what 5G is all about. So what we are going to do today is tell you in detail about what 5G is. The emerging 5G network features low latency, high capacities, fantastic speeds. Now I'll give you a small example, a simple example which we and you will understand. The speed of 5G as compared to 4G LTE would be something like this, that if you are trying to download a high resolution movie, which with the current technology takes about 7 to 10 minutes to download, with 5G there in place, it may take a few seconds, maybe 10 seconds or maybe 15 seconds. There are experts who will actually correct me. That is the kind of speed you are looking at. You're looking at low latency. We're looking at enhanced capacities. It is going to impact every single walk of life, be it agriculture, be it medical, be it anything, be it defense. And today, my dear viewers, we have a fantastic panel of experts, the very best in their respective fields with me, who are going to tell you all about 5G, its applications, and how this whole thing is going to change our entire mind, entire environment, and entire perception of how connectivity and how speeds will take place in times to come. I have first Colonel retired Vikram Tiwathia. Vikram had an outstanding career in the army. Mind you, आप लोग समझे इस बात को कि जब विक्रम को कॉर्पोरेट ने अपने हाथ से उठाया और अपने साथ मिलाया, उस समय विक्रम इंडियन आर्मी के सर्वश्रेष्ठ आर्मी ऑफिसर्स में से एक और ऊपर की तरफ प्रगति की तरफ अग्रसर था. He was on his way to the helm in the Indian Armed Forces. Today, he is the Deputy Director General of COAI, handling all kinds of high-tech and communication technology affairs, dealing with the government, dealing with the industry, and dealing with everyone. Today, he is going to tell us all that we need to know about 5G, what revolution the 5G is going to bring into our lives. And welcome, Vikram, to the panel, to Metamorphs. Thank you, Anuj. Next, we have Dr. Sendil Kumar. He is currently responsible for all standardization, spectrum and operator, and industry coordination initiatives of Ericsson. Ericsson India, I don't need to tell you what Ericsson India is all about. He's a great scholar, he's a great scientific speaker, and he is with the Ericsson for more than 3 years. He holds a Ph.D. from the Indian Institute of Technology, Madras. I think we are going to get some extraordinary inputs from Dr. Sendil Kumar. Dr. Sendil Kumar, welcome to Metamorphs. Thank you, everyone, and good morning. Jai Hind to everyone. Next we have on the panel is Bharat Kumar. He is the head of corporate affairs in Sterlite Technologies Limited. He has done more than 27, nearly 3 decades, mind you. It's a huge experience. 3 decades in telecom regulatory and policy and ICT. He's a great scholar, highly qualified, a renowned gentleman who has been, talking about all these things across the globe. A great speaker. Welcome, Mr. Bharat Kumar, to Metamorphs.
Sir, thank you. I am Bharat Gupta, sir. Okay, Bharat Gupta ji, I'm sorry, and you are welcome to Metamorphs, Mr. Bharat Gupta. So very kind. He's also ex-Signals guy. Oh, how nice, yeah. I was not aware of that. Very welcome. Very welcome. And I know all the Signals people, you know, how you people are doing. And then we have Colonel Dr. Mukul Kumar. And he's an anesthesiologist, a great speaker, a great scientific speaker, I would say that. And also he writes, and he writes in detail about his profession, and he writes in details about the latest technologies that can be utilized in the field of medicine by us. You know, we couldn't have got a better gentleman to speak to us on the use of technology in the medicine, in the field of medicine, 5G technology. He is also the chief editor of famous journal Annals of Cardiac Anesthesia. You know, cardiac anesthesia is a very specialized field. And he is also editor of the popular update book called Yearbook of Anesthesiology. Welcome, Colonel Mukul Kapoor. Thank you, sir. It's a pleasure. In addition to us, we are going to be joined by mighty CP Gurnani, who's the MD and Chief Executive Officer of Tech Mahindra, and a man who has received dozens of national and international awards. He has been the IT man of the century or something. I don't know if I had to talk about CP Gurnani. He's busy with the minister as of now. CP will join us towards the end of our session. I here in his absence extend a hearty welcome to CP. Vikram, will start with you. You know, you are the person who's been handling all this, and you know exactly what is the thought of the entire 5G system and 5G spectrum. So we would request you to kindly tell our viewers in detail about everything about that we need to know. And I would request you to keep it, you know, so that a common person can understand that what we are in as far as this one is concerned. Viewers, I will request you to kindly, you know, like the video in case you'd like it, subscribe to my channel, and press the bell icon. Vikram, please, I leave it to you. Anuj, thank you so much. And it's a pleasure to be here at Metamorphs. And in the short address that you've just covered, it's very interesting. And for the viewers, अब आप ये सोचो, till now, you know, you had 2G, 3G, 4G, right? But globally, mobile technology was not a political issue. But 5G has become a political issue as well. So earlier, okay, countries would go ahead and, you know, give out spectrum or give out, you know, licenses for telecom operators to go ahead and, you know, launch these services, right? So in case of 5G, fundamentally, जो इसकी अहमियत है, it is that it allows a country or it allows people who use this technology to enhance your efficiency of doing things. So before I go into my presentation, I'll just say that, you know, when, just for example, when 4G came, right, the marriage of 4G, which is the network, with the smartphone and the internet, and then you add to that KYC, right, it allowed or enabled, you know, new services to be provided to the public at large. For example, Uber and Ola happened, right? Airbnb happened, right? So now the world has changed the way you look at transportation. And what it has done is it has unlocked the potential to utilize जो एक गाड़ी है, एक कार है या एक ट्रक है, वो पूरी रात भर आपके घर पे खड़ा रहता है. दिन में आप जाते हो दफ्तर, फिर दफ्तर में पूरे टाइम खड़ी रहती गाड़ी, राइट? फिर 1 घंटे के लिए, मतलब 24 घंटे की साइकिल में वो गाड़ी मान लो
1.5-2-3 घंटा इस्तेमाल होती है, बाकी time your capital is locked in that car. Similarly, when you have a room or other things, right? So the shared economy. So fundamentally, before I begin the presentation, the importance जो जरूरी है कि efficiency in engineering terms is defined as output by input. So how can I increase the country's efficiency? I can reduce the cost of inputs. How do I reduce the cost of inputs? Because now you have data being produced. उस data का पसीना निकालना है हमें, उसका निचोड़ निकालना है. So the network allows you to move the data, but then somebody writes an algorithm to make that data work in a better way for you, right? So sum total जो है बहुत simple तरीके से, any country which has digitized across sectors stands to benefit by using these technologies like 5G. So far, you were connected, only a mobile to mobile was the connection predominantly. 4G started something like, Internet of Things and connecting more things. But 5G essentially will be connecting everything. ये जैसे मेरा पीछे घर दिख रहा है या सेंदिल का है, भारत का है. Within the house, there are already smart home solutions which allow you to reduce your electricity consumption, allows you to have, more efficient air conditioning management or, water management, sewage management. So all this put together will be enabled if you use data more efficiently, and the 5G network will enable the country and individuals to do that, right? So this is to begin with for putting a level understanding. And with that, I'll now take you through a presentation which gives somewhat more details of, where we stand in India, what the status is, and how it's looking. Before I proceed, is my presentation visible, please? Yes? Yeah. Okay, thank you. So it's not coming in presentation mode now, I guess. Yeah, that's... That may be a shade better. So here is an evolution when we started with a 1G, which was analog communications. We stepped up around 1990 and got 2G, right, which improved voice and security, and SMS came in. Around 2000 or so, the early 3G, which was, mobile data was enabled. And then we came along in around 2010, where 4G was there, where mobile broadband, right, that enabled LTE Advanced, and smartphones. Apple came up with this whole smartphone thing. In fact, when the smartphone came up in AT&T networks in the United States, because it consumed so much of data and, presented a whole new way of providing services through the app ecosystem, the network came under a lot of pressure. And that is when work around 2010, 11, 12 started on 5G. And today we have 5G, which is immersive broadband, where, the moment it gets launched, you'll have a whole lot of broadband. And as Anuj said, low latencies, high capacities. So this is the evolving. And if you see every 10 years, in fact, I'm happy to share, we are already in India. Sendil and me are part of 6G working groups to start working on 6G. And the ITU, that's the International Telecom Union, has started examining what should 6G look like. You have to first get an idea what it looks like. But today, since we are talking of 5G, I'll leave it at that. Excuse me. So here is the current digital snapshot of India. If you see total broadband subscribers, 792 million, but I'm not happy with this figure because this is defined by the government as, 512. Nobody globally talks of broadband at 512. So minimum, but in sheer numbers, that's how it is. Very heavy consumption, about 8.8 exabytes of mobile data traffic as of December. But the good part is, let me show you, is this 14.10 GB, which is per subscriber. All of you attending this session or participating here, average 14 GB per month is consumed.
And let me tell you, this is the highest in the world by a long shot. The next nearest to us is South Korea, which is around 9 GB per subscriber, and they've had 5G networks for the last 4 or 5 years. So what it shows is that the capacity to consume data in India is very high by its sheer size, right? But on the flip side, if you see the last one here is $0.13 US is the average revenue that networks or telecom operators like the Airtels, Vodas, and Jios and BSNLs, again, this is way too low. So just beyond, when you see the ARPU per month down below, 142 rupees, it's just about $2. Whereas globally, this would be in the range of $40 to $50. So the point is that if you don't earn or get enough revenue back from what you have deployed in the network, your ability to expand the network for the rest of the country gets more challenging. But this is the overall wireless snapshot of the country. Here, very quickly, building up is a wireless voice usage. So wireless voice is mostly predominantly voice over LTE now, VoLTE as it is called, or voice over Wi-Fi. And today, most tariff plans, if you will see, they are kind of, bundled with a data and voice, because voice essentially is now become data, right? But India, again, बहुत बात करते हैं, maximum globally ना जो जितना voice traffic है अपने networks पे is very, very high. But again, the challenge is that the revenues are way below par. So you can easily expect, recently last month only, all 3 operators have raised the minimum plan from 150 rupees, I think it's gone to $175. And this, is likely to go up to about 300. Minimum ARPU has to be 300 instead of this 142 to make ends meet. Here is another one. This is about how much wireless data. As आप जैसे देखोगे कि कितना अभी 14, this is increased substantially, and in GB per month, जो मैं पहले बता रहा था. So basically, it is that the consumption of data is there's a huge appetite, and अभी only smartphones जो है वो while 1.2 या 1.1 billion total connections हैं, SIM cards हैं, but dual SIM चलता है इंडिया में काफी. So it is about 800 million total phone connections if you take out the dual SIM. और उसमें स्मार्टफोन केवल 600 मिलियन के करीब है, बिकॉज एंड में जो भी डेटा इस्तेमाल होगा, द फॉर्म फैक्टर जहां पे वो कंज्यूम होता है वो मैक्सिमम जो है वो आपके मोबाइल में होता है, और 5G में तो ऑफ कोर्स वो सेंसर में होगा, आईओटी में होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, मशीन्स में होगा. But still, predominantly, the consumption is on the device, which is the form factor of the device. So, why I'm dwelling on this? इसलिए कह रहा हूँ कि 600 मिलियन है, और अगर हमारी 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ का स्कोप है is very substantial. Only half the country has got smartphones. So we tend to be very happy, when election rallies mein they say, okay, we will be gifting iPads and smartphones. But that is a very good and a genuine, requirement of people. Just to see कि COVID में, if all the education गांव में, rural में, education भी phone के through हो रहा है, smartphone के, आपका medical health भी smartphone, और पूरी एक family में अगर एक ही smartphone है, तो वो smartphone की कितनी importance होती है, तो और connection की. So that is something I thought I'll just convey to you all. This is a very interesting portal. It is called Tarang Sanchar. जितने भी participate कर रहे हैं, I think if somebody can put the link in the YouTube channel, tarangsanchar.gov.in. इसमें जाकर के आपके गूगल मैप के ऊपर कोई भी लोकेशन, जैसे आप गूगल की लोकेशन देखते हो, आपको अपना घर के पास या दफ्तर के पास या जो जगह देखनी, वहां पे टावर किसका लगा है और उस टावर के ऊपर कितने रेडियो लगे किस कंपनी के, वो पूरा पता चल जाता है. तो यहाँ पे जो BTS है, BTS को बोलते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जो टावर के ऊपर रेडियो आप देखते हो,
उसको बोलते हैं बीटीएस। तो 23 लाख बीटीएस हैं इंडिया में, जो कि 7 लाख टावर पे हैं। तो 7 3 21, हर एक टावर पे ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड 3 बीटीएस। एयरटेल का होगा, वोडाफोन का होगा, जियो का होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर इस तरंग संचार पोर्टल पे मांगोगे, आपको वो ईमेल से आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। बट दिस शोज वेयर द नेटवर्क इज। सिमिलरली जब 5G का रेडियो आएगा, तो 5G जब लगेगा, यू कैन सी जहां पे आप रहते हो या काम करते हो कि कितने 5G के बेस स्टेशन आपके इर्द गिर्द, आपके एरिया में जो आप चाहते हो वहां किस किस का लगा है। This is the home page. This is what it looks like. ये जो बॉक्स आप क्लिक करोगे, और ये मैंने देखा, ये कहाँ, आई थिंक ये लद्दाख। हाँ, आई थॉट पूरे इंडिया में सियाचिन के बेस कैंप में है, वहां भी दिखेगा आपको। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मतलब पूरे इंडिया में सारे बेस स्टेशन दिखेंगे वो इस तरीके से। जो हरे रंग के वो दे आर ग्राउंड टावर्स, जो ब्लू कलर के दिखाए हैं दे आर रूफटॉप टावर्स। एंड ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पोर्टल, वहां पे आरएफ कवरेज, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो की कवरेज है आपके एरिया में डाउन टू डिस्ट्रिक्ट, आप जाकर के यहाँ देख सकते हो। जैसे मैंने एक इसमें दिखाया आंध्र प्रदेश, आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कौन से गांव में। तो दिस यू कैन सी, और नीचे मैप था वो स्क्रीन में आया नहीं, बट जस्ट फॉर कॉमन पीपल, these are facilities you can use to see the network coverage of 4G and 5G. A little mention of the national broadband mission. Like I said, countries see this as a very important national objective. Digital India का तो आपने सुना ही है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया गया 2019 के दिसंबर में, और उसमें ईयर वाइज टारगेट दिए हैं। और जो टारगेट थी अभी तीसरे साल की 2022 की, 100% गांव में लगना चाहिए था, और ब्रॉडबैंड की स्पीड 25 होनी चाहिए, अभी वो 18 के आसपास है। और जो टावर में फाइबर लगना बहुत जरूरी है, भरत जी बात करेंगे उसके बारे में, बिकॉज फाइबर ना आपको कैपेसिटी देता है और बहुत जरूरी है फाइबर का होना। और नीचे जो है टोटल टावर 10 लाख होने चाहिए, जैसे मैंने बताया अभी केवल 7 लाख के करीब। सो वे इन इंडिया वी नीड अ लॉट ऑफ national synergy to get much more broadband to people, and this has been substantially driven home कि कोविड और लॉकडाउन में आपको पढ़ाई भी ऑनलाइन करनी है, मेडिकल फैसिलिटी भी ऑनलाइन है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी है, टिकटिंग बुकिंग सब ब्रॉडबैंड के जरिए है। Now here is the future for India. These are projections. I'll leave it at that, but substantial growth. So the slides would be available to you for seeing. But the good news is a lot of growth potential is there for us in India. This again is very interesting. Just I bring your attention. नीचे जो बॉक्स है आप उसमें देखें, इंडिया में ना ऐप खूब इस्तेमाल होती है। अल्टीमेटली ये जो स्मार्टफोन है ये काम कहाँ से करता है, इसके अंदर जब ऐप होएगी तो वो आपको सर्विस आएगा, ठीक है, नहीं तो इट इज लाइक अ पेपर वेट, ठीक है। बट so here is how India is utilizing broadband. About 14% of 218 global app installs, and the growth is about 28%, which is 4 times higher than the global average. So the good news is that the average citizen, जो आम नागरिक है, वो इस ब्रॉडबैंड का, ये डिजिटल कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, लोग करते क्या है, एक्टिविटी क्या करते हैं इस पे, तो अभी आप देखो ऑनलाइन ग्रीन में जो है डिजिटल मीडिया में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, और पेड डिजिटल वीडियो, और डिजिटल खरीद क्या है, सब्जी। इंडिया इज ग्लोबली आई थिंक द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। अब 5G की एप्लीकेशन जो है, अब मिल्क कितनी जल्दी खराब हो जाता है, बट टू बी एबल टू यूटिलाइज द मिल्क, जब क्या आप दाना प्रोड्यूस करते हो, जो बोते हो, जो मवेशी खाते हैं, उनके पाँव में वेरेबल लगता है, एंकलेट, कि वो कितना घूमता है, उसकी सेहत कैसी है। सो एज पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ 5G, योर एबिलिटी टू यूज दैट मिल्क और फ्रेश with less cost of input and more efficiency will go up. On the digital payments, of course, in fact,
सुंदर पिचाई ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोला कि यूपीआई, इंडिया के आप यूपीआई को देखो और कितना अच्छा काम कर रहा है. इट इज वन ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड. यूपीआई एंड आधार पूरी दुनिया में ऐसी, इट्स कॉल्ड द इंडिया स्टैक. दिस इज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस where citizens to identify your own citizens. India is a part of this, is an export potential of this technology application, right? और ये 5G में और बढ़ेगा. इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप सुन रहे होंगे. तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और कैसे एफिशिएंट बनाया जाए. कोई भी अब मारुति की फैक्ट्री है या जो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहां जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर थिंग्स इन अ मोर एफिशिएंट मैनर, and 5G will enable that. So it's called Internet of Things and Industry 4.0, and over 5,000 patents for this have been filed in India. And all global R&D means Indian software brain power is contributing to the global, development of global technologies. In Industry 4.0, cloud computing is a very big thing. Open source is another thing which will help reduce costs. There's global movement. And India is only second to China at the largest growing cloud services market. Cloud naam acha hai, bolte usko cloud hai. Basically, it is a very big server farm. बहुत सारे server वहां लगे हैं. And a very big potential is this blockchain technologies, because your ability to compute is something which is driving a lot of cloud requirement. The banking, the government and telecom companies are key. They would be utilizing open source adoption in the country, which will help reduce the cost of building out networks. यहाँ पे AR VR के बारे में बताया गया है कि कैसे AR ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कितना स्कोप ऑफ ग्रोथ है इंडिया में. और ये 5G जो नेटवर्क है वो AR VR को अंडरलाइन करेगा और enable services using AR and VR to be given to the armed नागरिक. Robotics is a very important application. Here, very quickly, I'm just showing, facility provisioning, billing, invoice generation, circuit testing. So all this robotics, and you can combine the drones as well. Many of you would have seen the 1,000 drones on, a beating of the retreat. Now, it is marvelous that, Indian companies, it's a very small startup company, जिन्होंने ये किया. और, there are multiple applications of drones as well. ये आप मैंने कहा it should be interesting कि कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं इंडिया में तो क्या चीज देखते हैं स्मार्टफोन खरीदने के लिए. और एज अ टेलीकॉम इंजीनियर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई स्मार्टफोन इसलिए नहीं खरीदता कि मैं उस पर वॉइस से बात कर सकूं, वो नहीं पूछता कोई. वो पूछता अच्छा इसमें कैमरा कौन सा लगा है, बिकॉज यू यूज द स्मार्टफोन, इट इज लाइक अ निंजा टूल, इट डज सो मेनी थिंग्स, राइट. सो व्हाट कंज्यूमर्स लुक फॉर बाइंग इज बैटरी लाइफ, उसमें मेमोरी क्या है, रैम, डिस्प्ले, camera, and audio quality is right at the bottom if you see, right? So it's interesting जो basic function है. Of course, technology support brand. इसमें let me tell you that if you are going for a phone, you should see the specific specs कि कौन से spectrum band वो support करता है. और तरंग संचार में आप देखो कि उस spectrum band को आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, वोडा या जियो, उस spectrum band में वो सर्विस है कि नहीं आपके घर के पास. Now, very important is that I mentioned earlier that the phone is only as good, how the work it does. So the app economy is really is a big thing, and affordability is a big thing. So rural area में जो 600 million में कह रहा था still to be connected or for a smartphone, we in India have to do a major effort in reducing the cost and making smartphones more affordable, particularly in a 5G environment. Now, what do people consume? So if you see here, the bottom blue is app downloads, Google Pay, Aaj Tak, live TV show, Ludo King, Zoom, TikTok. These are big, app downloads. And if you see media consumption,
I think all of you must be already doing this, but there is in India, people don't want to pay much money for an app, but yes, it's becoming much more affordable. This is what Anuj mentioned. 5G has essentially three major things. One is called enhanced mobile broadband, कि आपके मोबाइल में 1 GB स्पीड आएगी. LTE में अभी भी वैसे 4G में बहुत ताकत है अभी भी, lot of juice. It can give you up to 100 Mbps, but imagine from 100 to 1 GB, right? That's how it, and then I was mentioning, when you come to the IoT or smart machines, it's like smart city, your smart home, smart villages, and ultra reliable low latency. डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ. अगर रोबोटिक आर्म चलाना है आपने, तो उसके लिए बहुत रिलायबल कनेक्शन चाहिए और बहुत हाई कैपेसिटी चाहिए. जैसे सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार्स हैं. In India, there is a good application for autonomous driving farm vehicles. In fact, Mahindra is already talking about automated driving tractor. जो मैं उबर का कह रहा था, अगर ट्रैक्टर इस्तेमाल, तो वो 24 घंटे क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? ऑटोनोमस होएगा और खेतों में ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी नहीं है. खेत में इनक्लोज्ड एरिया है, you can drive, right? Similarly, on the airport side, air side, there's very orderly traffic. So autonomous driving airport vehicles, right? So there is a lot of potential that companies and cities are examining. अच्छा, डिवाइस इकोसिस्टम की भाई ग्लोबली सस्ते कैसे हो रहे हैं? तो दिस इज एज पर द ग्लोबल सप्लायर एसोसिएशन. मोबाइल फोन 608 मॉडल हैं जो कि कमर्शियल हैं. अभी 572 आप खरीद सकते हो. फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस वो होता है जैसे पहले यागी एंटेना होता था. इट विल बी अ डायरेक्शनल एंटेना जो आप अपनी बालकनी में लगाएं और उसके बाद बहुत हाई स्पीड आपको कनेक्शन मिलेगा, which within the house you can do. So this is called fixed wireless access. बाकी आपके लैपटॉप है, नोटबुक है, हॉटस्पॉट है. So this is developing at a very rapid pace. तो उससे क्या है, ये जो डिवाइसेस हैं वो सस्ते हो रहे हैं क्योंकि आपके लैपटॉप में, आईपैड में 5G enabled वो वाईफाई होना चाहिए. तो ये और इंडिया में अगर आप नीचे जो ब्लू बॉक्स है उसमें देखें, 10 मिलियन स्मार्टफोन ऑलरेडी नेटवर्क में आ चुके हैं. अभी 5G लॉन्च हुआ नहीं है, बट द पब्लिक इज ऑलरेडी बॉट द स्मार्टफोन्स. What are our members or telcos, Airtel, Jio, Voda Idea, and Ericsson, Nokia is doing? So we have India Mobile Congress in Delhi every October. पिछले 2 साल से ऑनलाइन हुआ तो वो डेमो नहीं हो पाए. इनफैक्ट एज वी स्पीक कल जो है मंडे को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चालू हो रही है बार्सिलोना में. And all these things are 5G technologies are being displayed there as well. In India, we displayed what is listed here: cloud gaming, fixed wireless access I was telling, ambulance, smart ambulance, karaoke, football, on smart agriculture, hologram. So these are all, already trials have been done. And I'll come to कि actual trial में क्या काम चल रहा है. यहाँ पे एक बहुत अहम चीज है कि जो नेचुरल रिसोर्स है 5G के लिए, दैट इज स्पेक्ट्रम, विच द गवर्नमेंट हैज टू ऑक्शन. आपने अखबार में पढ़ा होगा दैट 15 अगस्त तक पीएमओ ने कहा है कि 5G को लॉन्च करें. तो जो टेलीकॉम रेगुलेटर है TRAI, वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की तैयारी कर रहा है. बट हियर वी आर सेइंग इन द पास्ट व्हाट हैज हैपेंड इज इतना महंगा स्पेक्ट्रम रखा है, तो वो it doesn't make sense to buy it at that high cost. So all these companies which I showed earlier, telecom service providers, were unable to buy it because of very high cost, and the auction was actually not successful. Only 37% of what was put on offer was actually picked up. So abhi by about June, July, we expect the next auction, and hopefully some 5G network will get rolled out a later part of this year. Globally, Asia Pac में क्या हो रहा है in 2022? Like I said, India is likely to get 5G networks going, and who will benefit? Early adopters, financial services, public sector, automobile and supply chain, and disruptive technologies. Like I mentioned, the example of Uber and Ola, right here. Complete new range of services and can be offered once this network is deployed.
GST would not have happened if you did not have a broadband network. So what the broadband network and going for the 5G will enable you to change how to deploy your taxation system of the whole country, right? So it's a big revolutionary facility. CoWIN application आपने देखी, and abhi today 1,600 crores have been, approved by the cabinet as well. 5G phone India में मैंने पहले कहा 10 million बहुत बढ़ रहे हैं ये. Scope is very good. Smartphones as well. And this was mentioned earlier, 5G, IoT, all these are various services. Security breach is an important thing. In 5G, the 3GPP, वो inbuilt security लेके आ रहा है as part of the security inbuilt 5G standards itself. I thought I'll display this part कि जब lockdown order हुआ तो broadband कैसे चला. So if you see the huge spike which happened in March of 2020 of broadband consumption, और होता क्या है जो telecom networks हैं, you generally build your network where there are more consumers. जैसे central business district है तो वहां पे capacity ज्यादा होती है. अब हुआ क्या कि वो capacity shift होकर के it went to all residential areas. So we had to reorient our networks to build capacity, which was done in a very rapid time. And when you see how during COVID, broadband helped the country and the economy to continue to function. This is trials. These have happened in 700, 3.3 and 24.25 spectrum bands. And Airtel did its first 5G rural trial with Ericsson. Sendil is there. He was part of this effort. And what they did was from a 5G side on a smartphone, they were able to deliver 100 Mbps over a 10-kilometer link. And on the other side, over a 10-kilometer link, 200 Mbps if you had fixed wireless access. So which is humongous. Imagine all the rural areas. You will not be able to lay fiber to every village. It's very difficult. While it's been announced by the government, the fact is the wireless will be the way to go. There are some challenges. कि भाई 5G के rollout में government has to give a lot of support. As I mentioned, frequency bands have to be offered. Spectrum price has to be lowered. 5G enabled devices have to be made more affordable. और जो permission होती है टावर लगाने की, ऑप्टिकल फाइबर लगाने की, राइट ऑफ वे, वो स्टेट और म्यूनिसिपल बॉडी जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन रखा है और अभी अक्टूबर में लॉन्च हुआ गति शक्ति प्रोग्राम, सो दैट व्हेन यू मेक अ न्यू रोड, you put the water pipeline, the optical fiber, the gas pipeline in one go, not कि बार बार हर बार जो आता है सर्विस लेके वो सड़क की खुदाई करे. Just as an example, security is there, and of course we need people who can utilize this technology best. So that was very quickly, while Anuj wanted more detail, but there's much more detail. But I thought for our participants on the YouTube channel, Metamorphs channel, this would give some, opening insights as to what is India's telecom scenario or 5G की तैयारी में क्या काम चल रहा है. So thank you. I'll be there are more experts and happy to address any questions from the participants. So thank you very much, Anuj. Thank you, Vikram. Can you unshare the screen? Yeah. Vikram, thank you very much. आपका बहुत बढ़िया presentation रहा, और सबसे बड़ी बात इस presentation की ये रही कि ये हमारे दर्शकों को बिल्कुल साधारण भाषा में बिल्कुल सही तरीके से उनको समझाया गया, जिसमें कि देखिए कुछ चीजें स्टैंड आउट करके आई हैं कि कितना हमारा डेटा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना हमारे देश में पोटेंशियल है, कितना हम लोग, आप देखें कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से लेकर के आपके जो सड़क पे ट्रैफिक की लाइट लगी हुई है वहां तक, आपके मेडिकल एरियाज में, बैंकिंग में, गवर्नेंस में, हर चीज में इसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है. और इम्पैक्ट की वजह जो विक्रम ने बताई, वो इम्पैक्ट की वजह यही रही है कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन स्पीड्स. मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि ये 20 Gbps तक इसकी स्पीड होने वाली है 5G की,
और बहुत रिडक्शन, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, रिडक्शन इन लेटेंसी, बहुत जबरदस्त अवेलेबिलिटी और कवरेज। स्कोप बहुत बताया विक्रम ने कि बहुत जबरदस्त स्कोप है। हमारे पास 600 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। अभी भी हमारे 700 से 800 मिलियन लोग जो हैं उनके पास स्मार्टफोन होने की संभावना है, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हम वहां पर स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, मोर इंपॉर्टेंटली, उसको बढ़ाएं किसी प्रकार से। और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एप्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से हम इसको बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में जो न्यू नॉर्म है वो यही है कि हर चीज के लिए आपकी ये ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हो रहा है। ये जो चीज है, ये चीज मेरे को एक सवाल पे लाती है, और मैं ये सवाल डॉक्टर सेंदिल आपसे पूछना चाहूंगा कि हम इतना बात कर रहे हैं कि 5G का इतना जबरदस्त इंपैक्ट होने वाला है और इतना जबरदस्त फायदा होने वाला है, इट्स गोइंग टू help us so much in every walk of life, in the daily routine. So I want to know what is the global deployment of 5G. कैसे आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कैसे 5G का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और वही 5G का डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से भारतवर्ष में, हालांकि मैं थोड़ा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की, भारतवर्ष में होने की इसकी संभावना है क्या? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G. Yes. Am I audible? Yeah. Okay, thanks. I think when we say 5G, like what we discussed earlier, it's going to give a lot of benefits, but then it is also built on existing infrastructure. जितने towers already लगे हैं, जैसे विक्रम जी ने बताया कि more than 23 lakh base stations, right? So when the operator is investing, he tries to see existing towers के अंदर how do we upgrade it. So what we see is more than globally 200 plus operators actually started deploying public 5G networks. They have upgraded the 4G networks or existing radio पे additional 5G network डाला हुआ है. So more than 200 plus operators already have a 5G network involved. So that's the statistics. And then people are also saying how do we build 5G network for normal mobile broadband as well as 5G for a fixed wireless access. Like Vikram ji ने बताया कि भी during COVID, that's where operators realize that people are hunger to consume more and more data if there is capacity available, right? India mein itself, like we saw 15 to 16 GB per month hum consume kar rahe hain. So when they started actually putting 5G services with very high speeds, you are actually consuming more and more data. Higher speed is more consumption. So operators realize that, and the number of network getting deployed globally is continuously increasing. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जिस प्रकार से ये इसका जो नेटवर्क डिप्लॉय हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, और 200 लोगों ने ऑलरेडी इसका डिप्लॉयमेंट इसका शुरू कर दिया है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सेंदिल कुमार. मैं अब मेरे को ये प्रश्न, इससे मेरे को लगता है कि इससे का विक्रम ने थोड़ा सा इसका मेंशन करने की कोशिश की थी, मैं इसको थोड़ा गहराई से जानना चाहता हूं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, तो जो एज अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज is the OFC for 5G broadband network, how important, and what are we doing about it? Yeah, so this question I would like to send it to Mr. Bharat Gupta. I think you will be the best person to answer this one. Yeah, thanks, General Anuj. See, before I come to the infrastructure part per se, there are a couple of points which I want to make as regards the 5G network is concerned. See, what has happened is 2G, 3G और 4G को अगर हम देखें तो they were in a natural succession of each other. मतलब ये था कि सेम व्हीकल, सेम इंजन, हमने उसको और एफिशिएंसी बढ़ाते गए उसके अंदर और उसको और ज्यादा ताकतवर बनाते चले गए. However, when we look at the 5G का architecture itself is very different. It is a complete break from the previous generations of the network. इसके अंदर हम कई तरह की चीजों की बात करते हैं. Virtualization becomes very important, और इसके अंदर सबसे important चीज जो दिखती है वो ये है कि जितना नेटवर्क का कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी है, that has been taken to the edge यानी कि to the nearest station. Yes. कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर कोई डेटा कंज्यूम कर रहा हूं, it should go all the way up to the central base station और वहां से फिर वो डेटा में मुझे मुहैया कराया जाए. So what has happened in 5G is it is more towards the edge part of it.
दैट इज नंबर वन. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये आता है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज द पीडीएफ, प्रोटोकॉल डेटा फंक्शन, जिसके तहत होता यह है कि मुझे जिस तरह की सर्विस चाहिए, मुझे उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है ये नेटवर्क. अगर मुझे लो लेटेंसी की सर्विस चाहिए, मुझे उस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. सो टिल 4G क्या था कि वन साइज फिट इट ऑल, मतलब आप जीन्स जैसे खरीदने जाते हैं बाजार में, वो जीन्स का जो नाप बना हुआ है आप उसके अंदर फिट इन करने की कोशिश करते थे. However, 5G is more about bespoke, based on the network requirement, based on the requirement of the enterprise, based on the end user requirement, the network can be tailored. Those services can be tailored for you. तीसरी चीज जो हम 5G के बारे में इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना, वो ये है कि द स्पेक्ट्रम जो हम यूज कर रहे थे टिल 4G, वो था 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज तक. लेकिन 5G के केस में हम इसके बहुत आगे जाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड बैंड, द 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड, और वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मिलीमीट्रिक बैंड विच इज द 24 गीगाहर्ट्ज बैंड. सो नाउ एक तरफ हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, हमें हमारी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, हमें हमारे यूज केसेस बढ़े हैं. सो देयरफॉर देयर वाज अ नीड to come out with a new technology, a new kind of a network which meets these aspirations. And therefore, we have seen this shift into the kind of architecture, the kind of spectrum that is going to be used. Now, I would just take a little, point here, that is regarding the Gati Shakti. Now, Gati Shakti is a very important and ambitious plan of the government of India, जिसमें कि 14 ministries involved हैं, and these are the growth engines for propelling the country into the 5 trillion economy. अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कर्नल विक्रम ने बताया था कि there is a need for cohesion, there is a need for common planning of laying of the infrastructure. हम अगर 5G नेटवर्क को देखते हैं तो 5G नेटवर्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हमें जो स्ट्रीट फर्नीचर जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हमारे बस स्टॉप्स हैं, जैसे हमारे मॉल्स हैं, जैसे हमारी कॉमन प्लेसेस है, उन सब जगहों को हर वर्टिकल एलिमेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ रेडिएटिंग एलिमेंट. क्योंकि हम हाई फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो हमें एंटेना पास लगाने पड़ेंगे. और जैसे विक्रम जी ने बताया, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैकहॉल कनेक्टिविटी जब आपको देनी है, बैकहॉल कनेक्टिविटी कैन बी गिवन ऑन अ ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. हम यहाँ लो लेटेंसी की बात कर रहे हैं. लो लेटेंसी बेस्ट आपको अचीव हो सकती है इस इन केस यू आर हैविंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल डिप्लॉयमेंट. आज की स्थिति अगर मैं देखूं तो हमारे देश में अगर हमने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन प्लान NDCP 2018 आया था फॉर विच इज अ काइंड ऑफ अ रोड मैप फॉर द कंट्री फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ वेरियस ICT सर्विसेज. ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने निकाला था 2018 में. और मैं ये बड़े मतलब मुझे खुशी होती है बोलने में कि इस NDCP 2018 को बनाने में कुछ हद तक मैंने भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया था. अब इसको अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारी बात ये निकलती है, NDCP 2018 में ये बात निकल के आई थी कि हमारा मकसद है 70% टावर्स जो है हमारे कंट्री में उनको फाइबराइज करने की जरूरत थी, जो कि आज करीब 30% ही सिर्फ फाइबराइज्ड है. सो देयरफॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इन टावर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. इसके साथ साथ जब हम देखते हैं जैसे गति शक्ति के अंदर हम लॉजिस्टिक हब की बात करते हैं, हम पोर्ट्स की बात करते हैं, हम माइनिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, हर जगह आज की डेट में नेटवर्क्स में बी नॉट अवेलेबल, बट उन इंडस्ट्रीज को, उन संस्थानों को चलाने के लिए ऑटोमेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब जैसे माइनिंग इंडस्ट्री अगर मैं ले लूं, उस माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर देयर इज सो मच ऑफ डस्ट, देयर इज सो मच ऑफ स्मोक. उस जगह अगर मैं अपने ड्रिल्स, अपने जो वाहन है, जो ट्रक्स अंदर चल रहे हैं, उनको मैं ऑटोमेट कर सकूं किसी तरह से, तो मेरी प्रोडक्शन ऊपर जाएगी एंड साथ ही साथ ह्यूमन कैजुअलिटीज के अंदर उसका काफी
हद तक जो है उसका असर पड़ेगा। नाउ सिंस ये एक फोरम है एंड अनुज आप यहाँ पे हैं, मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसके लिए भी 5G नेटवर्क्स की बहुत सख्त जरूरत है। इट इज अ रिक्वायरमेंट। हमने देखा आयरन डोम जो था उसको कितने एफिशिएंटली यूज किया गया था इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ समय पहले हुई थी। Those kind of applications can also be developed for our defense forces and can be efficiently deployed for our मैं सबका ध्यान आकर्षण यहाँ पे करना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं कि इतने सारे एंटेना लगाने हैं, पास लगाने हैं, तो एक शक या एक शुबा दिमाग में जरूर आता है कि कहीं इससे रेडिएशंस का इफेक्ट तो नहीं होगा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। तो एक इसके अंदर यही कहना चाहूंगा मैं कि भले ही एंटेनास आपके इतने पास लगे हों, भले ही देयर इज अ कांग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स, बट इसका स्वास्थ्य के ऊपर ऐसा कुछ कोई तथ्य नहीं है जो कह सकें कि इसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सब हमने समझ लिया कि भाई कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये 5G नेटवर्क की हमारे देश को बहुत जरूरत है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगना बहुत जरूरी है। बट साथ ही साथ एक कॉशन हमें मतलब एक कॉशन हमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमारा देश जो है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या हमें वाकई उस हद तक ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी? दिस इज समथिंग व्हिच वील हैव टू सी एंड इट हैज टू बी, दिस पाथ हैज टू बी ट्रेड वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू भरत गुप्ता, बहुत अच्छे से, बहुत तफसील से और बहुत साधारण शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार OFC जो इनका इसका जो आर्किटेक्चर है उसकी किस प्रकार से हमें आवश्यकता है और कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से किस वेवलेंथ में, किस बैंडविड्थ में ये काम कर रहे हैं और कैसे हम इस पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं डिफेंस के बारे में और इसके बारे में आगे पूछने की कोशिश करूंगा। आई थिंक आई विल कम टू यू विक्रम फॉर दैट लेटर, गिव मी सम टाइम। पहले मैं जानना चाहता हूं मुकुल के पास। मुकुल, जैसा कि आपने देखा पिछले 2-2.5 वर्षों से पूरी दुनिया कोविड के चंगुल में है और कैसे हमने कोविड का मैनेजमेंट किया, कैसे मेडिसिन मैनेजमेंट किया और किस प्रकार से हमने इन चीजों को देखा। इसमें ऑटोमेशन की महत्ता, जो ऑटोमेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो इसके अंदर बहुत साफ उभर के आई है कि किस प्रकार से हमने अपने ऐप से, मोबाइल से और इन सब चीजों से किया। तो मैं आपका इसके बारे में व्यू जानना चाहता हूं कि ये ऑटोमेशन जो है या 5G अगर आएगा वो हमारे हेल्थ सेक्टर को किस प्रकार से प्रभावित करेगा और उससे हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या फायदे होने वाले हैं। एक आध प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के, लेकिन आप मुझे पहले ये बेसिक इसकी इशू के बारे में बताएं। धन्यवाद जनरल अनुज। ये अगर ऑटोमेशन या 5G आएगा तो बहुत ही सुधर जाएगी चीजें, पर अभी जो 4G पे भी ब्रॉडबैंड चला है उससे भी हमारे को बहुत फायदा हुआ है। अगर आपने देखा हो कोविड के दौरान बेड्स की बहुत समस्या थी, डेटा कलेक्शन पेशेंट्स की बहुत समस्या थी। अगर ब्रॉडबैंड नहीं होता तो आज गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी सारी जो कंसल्टेशंस थी, टेली कंसल्टेशंस थी, सब ब्रॉडबैंड बेस्ड थी। पेशेंट्स अगर ब्रॉडबैंड नहीं होता तो हम पेशेंट को देख ही नहीं पाते, इतने नंबर्स में नहीं देख पाते। पेशेंट्स को भी फायदा हुआ, उनके लिए कॉस्ट कम हुई, उनको फायदा हुआ कि रिमोट लोकेशन से पेशेंट्स ने हमारे को कंसल्ट कर लिया। मैंने पेशेंट कंसल्टेशन दिया दिल्ली बैठ के, पूना में पेशेंट बैठा हुआ, उसको भी कंसल्टेशन दी है और उसको फायदा मिला है इसका। इसके अलावा वायरस की प्रोफाइल कैसे चेंज हुई है उस दौरान में, उसकी मैनेजमेंट कैसे चेंज हुई है, उसके बारे में भी हमारे को बहुत फायदा मिला 5G से। मैं रोज जर्नल पढ़ सकता था, लेटेस्ट जो आ रहा था वर्ल्ड में, जहाँ पे भी कुछ हो रहा था, नई चीज आई, ये दवाई काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका मैनेजमेंट, वेंटिलेशन का कैसे मैनेज करना है, पेशेंट आईसीयू में है इसको कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या चेंजेस आए, हर रोज एक नई चीज आ जाती थी। और हमारे बिकॉज ये बीमारी ऐसी थी कि इसके बारे में लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, और रोज बीमारी हमारे को रोज सिखाती थी और कुछ लोगों को अच्छा कुछ और सिखाती थी, कुछ लोग हमारे को और सिखाती थी। तो हम एक दूसरे से कोलैबोरेट करके हम पेशेंट्स को प्रॉपर केयर दे सकते थे ये ब्रॉडबैंड की वजह से। पर आप अगर देखें, अगर इसकी जगह 5G आ जाएगा तो और क्या फायदा हो जाएगा। फायदा ये होगा कि हम
किसी चीज को और जल्दी कर पाएंगे, लेटेंसी नहीं है उसमें। अगर आप रोबोटिक सर्जरी करनी है, आज के दिन हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, इवन एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जन जो एंजियोप्लास्टी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट है वो बैठा अमेरिका में, इंडिया में एंजियोप्लास्टी कर रहा है, वो गाइड कर करके रिमोटली कर रहा है। ये इसमें लैग पीरियड आ जाता है 4G में। अब 5G में लैग पीरियड नहीं आएगा, लैग पीरियड नहीं आएगा तो रिजल्ट्स और भी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा 5G आने से, क्योंकि 5G में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ केयर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद वन थिंग। जो 4G में आप मे बी 10 डिवाइस कलेक्ट कर पाओगे, 12 डिवाइस कर पाओगे, पर 5G में 100 डिवाइसेस तक एक साथ आप कर सकते हो। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ केयर हॉस्पिटल में होते हैं, जिसमें एक नर्स भी है, फार्मेसी भी है, बहुत कुछ है, तो सबके सब एक पॉइंट में कनेक्ट करके आपको डेटा दे सकते हैं। हॉस्पिटल लॉजिस्टिक इंप्रूव कर सकती है। इसके अलावा जो आज के दिन अगर आपको शायद लोगों को मालूम नहीं हो कि आप जो सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं, जो अमेरिका में सीटी स्कैन और एमआरआई होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग इंडिया में होती है। ये शायद लोगों को मालूम नहीं है। ये बहुत हेवी डेटा फाइल्स होती है। सीटी स्कैन की इतनी सारी फाइल्स आती हैं, या रेडियोलॉजिस्ट इंडिया में देखता है, इस पर रिपोर्ट देखता है, वापस अमेरिका जाती है। तो दिस इज रिमोट, व्हाट इज कॉल्ड एज टेली रेडियोलॉजी। टेली रेडियोलॉजी टुडे इज स्लो बिकॉज दोस फाइल्स आर वेरी हैवी, बट once you have 5G, this will become excellent. We will be able to do lots of things. इसी तरह टेलीपैथोलॉजी भी है, टेलीपैथोलॉजी है, टेली डर्मेटोलॉजी है, टेली साइकियाट्री है। आपको ये बताऊं कि कोविड ने हमें एक चीज सिखाई कि टेली कंसल्टेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव। मेरे हॉस्पिटल में जो साइकियाट्रिस्ट है, आज फिजिकल मीटिंग भी शुरू हो गई है, पेशेंट फिजिकली आ रहे हैं कुछ महीनों से, पर साइकियाट्रिस्ट आज भी प्राइमरीली टेलीमेडिसिन से पेशेंट्स को डील कर रहा है, बिकॉज वो उसको लगता है ये इजियर है, मेरे पेशेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मैं ज्यादा पेशेंट देख पा रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू डू इट एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसके अलावा आप 5G आएगा, नेटवर्क आएगा, तो पेशेंट्स की स्लीप ट्रैकिंग, फिटनेस ट्रैकिंग, उसके डायग्नोस्टिक लाइक ECG मॉनिटरिंग रिमोटली, उसके आजकल वॉचेस में भी ECG मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी आ गई, मोबाइल में ECG मॉनिटरिंग। तो अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को स्टडी करना है, इस पेशेंट को चेस्ट में पेन हुआ, उस वक्त ECG चेंज आए, वो जब घर में था वो उसमें दिख जाएगा विद द हेल्प ऑफ 5G। सिमिलरली उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया किसी कोई काम करते हुए, या उसका ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो रहा डायबिटीज की वजह से, ये सब हम अब कर पाएंगे। और ये वेरिएबल टेक्नोलॉजीज इनको कहते हैं, जो वेरिएबल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो 5G पे एक्सीलेंटली फंक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया फंक्शन करेंगे। और इसके अलावा एक मोबाइल हेल्थ भी बहुत बड़ी चीज, एम हेल्थ कहते हैं, एम हेल्थ भी बहुत बड़ी तादाद में आ रही है, और एम हेल्थ के हेल्प से भी, मोबाइल के हेल्प से भी हम अल्ट्रासाउंड तक कर सकते हैं। पेशेंट जो रिमोटली बैठा उसका अल्ट्रासाउंड भी रिमोटली कर सकते हैं। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि रिसर्च में 5G बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कोई ट्रायल कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं, पेशेंट को आपने वैक्सीन दी, वो 10 जगह अलग अलग जगह में है पेशेंट, उनका जो फीडबैक है वो 5G के से हमारे को ज्यादा अच्छा आएगा, और हम ड्रग्स की डेवलपमेंट भी मच फास्टर तरीके से कर पाएंगे 5G के वजह से। थैंक यू मुकुल, बहुत आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि किस प्रकार से हम मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं। उन टेक्नोलॉजीज के प्रयोग से किस प्रकार से हमने दूर दूर बैठे हुए स्पेशलिस्ट से, दूर बैठे हुए लोगों से उनकी रिसर्चेस का फायदा उठाया है, उनके पेपर्स का फायदा उठाया है, उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया है, और आपने देखा कि कैसे रेडियो डायग्नोसिस ये हो रहा है। और लेकिन आपने बताया फाइल्स जो हैं वो बहुत हैवी हैं और उनको भेजने में समय लगता है। वो 5G के आने से वो बहुत तेज तीव्र गति से हो पाएगा और बड़ी आसानी से ऑलमोस्ट रियल टाइम में आप लोग इसको देख पाएंगे और इसके दूसरे लोगों की एक्सपर्टीज का फायदा उठा पाएंगे। वास्तव में 5G टेक्नोलॉजी जो है वो एक अमृत का काम करेगी as far as the medical field, medical sciences and hospitals and treatments are concerned. Mukul, I will come back to you for one small thing. उसके पहले मैं डॉक्टर सेंदिल में आपके पास दोबारा आना चाहता हूँ। डॉक्टर सेंदिल, ये 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम है, ये 5G के स्पेक्ट्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में the people are not very sure of 5G spectrum. So kindly educate our viewers on 5G spectrum. Yeah. Thank you, General Mathur.
I think before we say, I think there may be a lot of people जो spectrum in general नहीं जानते होंगे from our audience. Yes, so, absolutely. So let me give a brief about understanding of spectrum. For example, आज if we have this radio FM at our home, right? In Delhi में जैसे आते हैं, we know Radio FM and Radio Mirchi and all those 3 or 4 stations. The moment we move away from that city, वहाँ जाते हैं दूसरे city में और एक FM radio station आ जाता है. अगर गवर्नमेंट डज नॉट रेगुलेट कि इस फ्रीक्वेंसी में ये वाला एफएम रेडियो चलेगा एंड एनीवन कैन पुट अ टावर, तो इससे ये हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, थोड़ी देर के लिए आप रेडियो एफएम सुन रहे हैं, अचानक किसी और का रेडियो सिग्नल आ गया. सो दिस इज द केस वेयर गवर्नमेंट एंश्योर्स दैट जो स्पेक्ट्रम दिया जाता है, जिस फ्रीक्वेंसी में किसी एक ऑपरेटर को ट्रांसमिट करना है, वो लाइसेंस्ड है और कोई और उसी फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट ना करे. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट्स कॉल्ड लाइसेंसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WPC वायरलेस प्लानिंग कमीशन है या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. हु टेक्स केयर ऑफ सेइंग कौन सा स्पेक्ट्रम कौन सा ऑपरेटर यूज करेगा. दैट इज वन. सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मच ऑफ स्पेक्ट्रम. आज अगर हमारे पास दूरदर्शन का एक टीवी चैनल आ रहा है एंड देन दूरदर्शन स्टार्ट सेइंग हमें एक स्पोर्ट्स पे करना है, एक और एक चैनल करना है, सो हमें मल्टीपल डेटा ट्रांसमिट करना है. उसी तरह से ऑपरेटर वांट्स टू ऐड मोर एंड मोर कैपेसिटी. जैसे घर के अंदर एक वाईफाई रूटर है, 2 लोग हैं, ठीक है. नाउ यू हैव अ स्मार्ट टीवी, आपका स्मार्ट बल्ब, बहुत से डिवाइसेस जैसे जैसे आते हैं, आपका वाईफाई रूटर का कैपेसिटी कम हो जाता है क्योंकि वाईफाई का स्पेक्ट्रम लिमिटेड है. उसी तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर को जब ही वांट्स टू ऐड 5G, ही हैज टू ऐड मोर एंड मोर स्पेक्ट्रम, ही हैज टू बाय लाइसेंस ऑफ मोर एंड मोर स्पेक्ट्रम. तो ये स्पेक्ट्रम जो है एक बार यूज हो गया एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, यू नीड टू बाय न्यू स्पेक्ट्रम टू ऐड मोर कैपेसिटी. दैट्स व्हाट इज द की व्हेन वी से वी वांट टू ऐड 5G स्पेक्ट्रम. तो अभी ट्राई एज अ रेगुलेटर वो अभी देख रहे हैं, दे आर डूइंग अ कंसल्टेशन, व्हाट आर द न्यू स्पेक्ट्रम बैंड्स. अभी 3.5 गीगाहर्ट्ज इज अ फ्रीक्वेंसी जहां पे अबाउट 100 या 80 मेगाहर्ट्ज तक एक ऑपरेटर हाई बैंडविड्थ चैनल चला सकते हैं. वी आर आल्सो लुकिंग एट न्यू स्पेक्ट्रम इन 26 and 28 gigahertz बैंड में, which is like a very in gigahertz frequency. तो वहां पे आपको 800 या 1 gigahertz तक का बैंडविड्थ मिल सकता है पूरा. With such a bandwidth, you can actually give 10 Gbps of a speed from single tower. So with that speed, you can actually serve say 10 houses, 20 houses, like 100 Mbps का direct speed आपको घर पे मिल सकता है. So that's the key, I would say it's the key ingredient for delivering 5G. That's the importance of having right spectrum. And that brings me to a question of devices. You know, there has to be an entire ecosystem of devices when the 5G gets, in. So, हमारे दर्शकों, can you please explain this ecosystem of devices? You've covered it slightly, but I would like a little more detail on that. Yes, let me add. So, I think India is such a country where before a technology comes, we are ready to just jump in, taste what it is. So absolutely right. आज हमारे वहाँ 5G launch नहीं हुआ है, but there are a huge percentage of devices which are actually 5G enabled in our country, and people are using it. I know my family, friends, relatives, they are asking, Sendil, मेरे phone में 5G आ गया, network कब आ रहा है, right? So we are ready with 5G devices. So more than 1200 models available है, announce हो चुका है globally, which are 5G enabled devices. उसमें से now, as I think Vikram and from our medical, maybe we saw how 5G is going to help. It's not 5G only in devices. We are looking at 22 different form factors. Phone is just one form factor. उसके बाद now we are saying मेरे को गाड़ी को track करना है, मेरा गाड़ी कहाँ पे, so you want one more SIM in there. So वहाँ पे भी एक module लगेगा. So it may not be a phone, but maybe in a different form factor, like a small chip or some module. So there are like 22 different form factors in which 5G connectivity enable कर सकते हैं. So more than 1200 variants, and उसके अंदर फिर इंडिया में जाओगे, then you have 5GI, Xiaomi 5G, Xiaomi this, so multiple variants. So there is enough variants and devices available today. Thank you. I think इन्होंने साफ बताया कि enough variants and devices available हैं. हमें जिस चीज की आवश्यकता है हम उसको we can opt for that, और उसको हमारे को अपने आने वाले टाइम में it's going to help. Vikram, can I get back to you? Can you tell us something about National Broadband Mission? You made a mention of it. A little more on that. Yes, Anuj, I will dwell on it. But let me first address, there have been a couple of queries on the Metamorphes YouTube channel.
I would have asked you those questions later, but then please handle them now. Please handle them. Yeah. I think, because in case people please do that. Please do that. One is a question on, interference with 5G, interference with radio altimeters, right? So this matter was more in the United States, but in India, there is a press release by the government, which has clearly said that there is a gap of about 500, gap in the sense there is a safety margin gap between the spectrum band in India and radio altimeters. So spectrum band in India is 3760 is for 5G, whereas for radio altimeters, it starts at 4200. So 500 ka gap hai. So the scope of interference has been clearly, the government has taken that into account, and the scope of interference is not there. And before I go further, it is such a pleasure to see Mr. Gurnani join in. Welcome, CPG. Hi, CP. Can you hear us? I guess, but he would in due course. Hi, CP. He's moving in a car. Hi, Jai Hind, CP. Jai Hind. Jai Hind, General Sahab. Jai Hind. My sincere apologies for joining late, but I can only tell you that I missed an exciting program, and particularly because it means increasing connectivity, creating connected solutions through 5G, and how it will benefit India. Great, CP. Great to see you. And we'll seek your views a little later in a little more detail. Yeah, Vikram, you were handling a question. Yeah. So I guess there is an article in Business Standard citing the Minister of State on this interference issue for our participants to figure out, right? The second question by Mr. Lalji Prasad is, how 5G will facilitate and encourage big data and big data analytics. I think it's amply clear, what Dr. Kapoor said, that on one side, like I mentioned, in individual people, India is the topmost in consuming data at 4 GB per person. Now, with in IoT and sensors and everything, so a lot of data is being produced. Now, as I mentioned, इस data का निचोड़ और उसका जो पसीना निकालना है काम करने के लिए, so 5G will enable the movement of this data in a very rapid way over the 5G network. Now, the analytics engine has to be written by the data scientists to utilize that data and make it work, to give you a solution, right? Whether that solution is for hospitals or for industrial automation, or like I mentioned, for sewage management, for, farming and agriculture. I guess Mr. Gurnani is from, Tech Mahindra, and I cited that Mahindra was working on semi-automated farm vehicles. So the question is certainly, Lalji Prasadji, that 5G will significantly facilitate big data movement as well as big data analytics. The last is about EMF, let's say EMF exposure. Bharat had mentioned that. So many studies, medical studies have been done by eminent doctors globally. And there is an ICNIRP, which is the International Commission on Non-Ionizing Radiation. So this radiation is non-ionizing, as many of you would understand. It is only, when you go into the X-ray region of higher frequency, that if it is incident on you, it can knock out an ion. And that knocking out an ion is what is the cancer causing part, right? But thousands of studies have been done, and there is a WHO fact sheet as well. And that says that exposure
in the spectrum bands used for 5G as well has been adequately studied and it is safe to use, right? So these were 3 questions. And coming back to you, Anuj, I've forgotten actually what you asked me. Okay. You want me to repeat it? Just give me a hint. I just said your national broadband mission. Yeah, because you made a mention of it, and I feel that my viewers would definitely have a little more insight on this. So there is. Mathur and Vikram, can I add a little bit? Yes. Yeah. So Vikram, I think one of the use cases, which you may have discussed it earlier in the panel, but most of the countries that I visit globally have not taken into account the benefit to the common man, the benefit to agricultural technology, benefit to the remote parts of India where, owing to connectivity, so agri-tech, I'm most excited about, because up till now, agri-tech is limited only to an improved version of Krishi Darshan. And if I start getting 3D images of the soil, 3D images of the crop, and if I'm able to direct a drone to give the fertilizer or a micronutrients or the pest control, all this I can do it because of 5G. Because 3D imaging, as you know, does take a lot of bandwidth. And if I can do 3D bandwidth on 5G, if I'm able to administer the right amount of nutrients, a study has been done that I need only 10% of the chemicals for pest control, less than 14% for fertilizers, and less than maybe 5% for accurately giving the requirements of the field. Now the question is, if I can eliminate this much of wastage, if I can benefit a farmer with the crop, we believe that most areas, if you're doing 1 crop, we can do 2. If you're doing 2 crops, we can do 3 crops, because we are able to help the farmer through agri-tech and through 5G. Oh, wonderful, CP. I think it's बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि agriculture में, क्योंकि there is a tremendous lot of wastage, and in case you want to, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप जैसे मिस्टर गुरनानी ने बताया कि आप 1 की जगह 2 और 2 की जगह 3 फसलें उगा सकते हैं, तो ये तमाम चीजें संभव हो पाएंगी अगर हम एक 3D इमेजिंग अपने जो फील्ड्स की कर पाएंगे और उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की और इन चीजों की हम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स पता पा पाएंगे और उसका बेनिफिट एक किसान को डायरेक्टली हम दे पाएंगे, और 5G आने से ये बहुत बेहतरीन तरीके से संभव हो पाएगा. थैंक यू सीपी. आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. या विक्रम, we can get back to you on that. So CP, thanks a ton. So as part of the country's realization कि भाई इसकी जो अहमियत है, आपने फार्मिंग के बारे में बताया, मैंने पहले ना दूध का एग्जांपल दिया था. इंडिया द टॉप मोस्ट milk producer in the country, but and as well as fresh. And because of a lack of cold chain, 50% of India's fresh, you produce it, but it gets... Yeah, absolutely correct. So coming back to the National Broadband Mission, so the country has realized the importance, as CP also, emphasized right now. But what requires, what Bharat mentioned, is the Gati Shakti program, right? Now, unless you have a broadband connectivity, which the country realizes has to have synchronous working with the state governments, local municipal bodies, because right-of-way permissions to install the telecom network infrastructure of optical fiber and towers has to be given by the local body, by the municipal corporation, by the state government. So what, under the broadband mission, they have ordered the constitution of state broadband committees, and within state broadband committees are also district level committees monitored by the district commissioner.
And there is a central portal being made where there is a time-bound approval process, so that you get time-bound approval to install the infrastructure. More details are available on the National Broadband Mission portal. So people wanting to know more can go there. But this is essentially, very quickly, the efforts on the National Broadband Mission. Back to you, Anuj. Yeah. One more thing, Vikram, I would like you to tell us or our viewers that, at times somebody covered it. Bharat, I think, spoke about it. There is a little bit of opposition by the locals. When you want to create a tower. More importantly, me and you both are from the service background. More importantly, erecting a tower in a military station or a defense land is one hell of a big bloody thing. So I just want you to, throw some light, little more light on it as to how we can tide over this issue, because we need to explain to them the benefits. Unless they understand the kind of benefits which they will get out of giving that little thing, allow people to make the tower, they will not agree to it. Yeah. Vikram. Anuj, I've been to multiple military stations where the ladies would complain, कि हमारे को नेटवर्क नहीं आता, मेरे को बालकनी में खड़ा होना पड़ता है, मेरे को इस कमरे में जाना पड़ता है. And on the other side, the authorities were not permitting the tower to be installed itself, citing, कि भाई हम auction करेंगे. So we are working with the Ministry of Defense to streamline their policy and permission process. And important. As per the Gati Shakti program, this is the whole idea, is that it has to be mutually supporting. Not ki bhai, how I will deny you a permission, but how can I facilitate giving you a permission? And with the railways, for example, it takes 1 year to get a permission. Bharat, Sterlite lays so much of fiber. So different government departments, what happens is railways works under the Railways Act. Highways Authority of India works under the Highways Authority Act. We work under the Telegraph Act. Now, so this realization. Yeah, Vikram, I absolutely agree with you. यार हमारे को ना, I'm telling you, Vikram, and my viewers also, कि हमारे को उस लेवल के ऊपर, एपेक्स लेवल के ऊपर एक ट्रिमेंडस सिनर्जी की जरूरत है. और एक unless you synergize your effort, मैंने अक्सर देखा है कि यार आप एक सड़क बना रहे हो, पीछे दूसरा बंदा आ रहा है, उसको खोद रहा है, कहता मैं यहाँ से वायर डाल रहा हूँ. अरे 5 मिनट पहले अगर आपका कोऑर्डिनेशन हो जाता तो I'm just saying कि इसको कैसे, I think it's very important to handle this. Vikram, I'll get back to you for your final comments. Before that, I have one last question to you. That is, how are we taking care of 5G things in the defense? And before I get to CP once again, how are we going to make use of 5G in defense? I've delivered 2 talks at MCT. One talk at RT School Devlali. Okay. And I approached our dear friend Gurpal Sangha when he was Chief of Staff in RT. Okay. Right. Because the fact is, here we are trying to, merge, let's say, the Army, Navy, Air Force as part of a combined arms effort, right? So essentially, as I mentioned about, the country's efficiency, output by input. So operational efficiency can be increased significantly by the use of 5G technologies in the defense. One straight away example, Dr. Mukul is here. Use it in all your hospitals. Yeah, absolutely. Right. I mean, remote surgery for a soldier in Ladakh being done by a surgeon sitting in RR hospital in Delhi, right? Or giving a diagnostics. So similarly, vehicle movement, for example, or you have these big industrial complexes of the ordnance companies and, the gun factory, the tank factory. So industrial automation. I mean, in the sense that, let's say you have a border management along your border fencing, the sensors out there, or using drones and, the 5G network. So there are multiple applications. And it is not about the signals to do it. This is a GS. It's an operational. That I agree. Military Operations Directorate should have a very strengthened, not even MO Directorate, I would put it as IDS, have a inter-service, dedicated team for 5G
network and applications. Absolutely, Vikram. जैसा विक्रम ने बताया कि सर्विसेज के लिए एक डेडिकेटेड इंटर सर्विसेज टीम, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसकी डेप्थ में जाएगा और 5G से किस प्रकार से हम अपना बॉर्डर मैनेजमेंट, अपना एम्युनिशन मैनेजमेंट, अपना सप्लाई मैनेजमेंट, अपना चेंज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एयर डिफेंस मैनेजमेंट, The list is endless. हम ये तमाम चीजें 5G की मदद से बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और डिफेंस में 5G का एक बहुत जबरदस्त रोल होगा. CP Vikram spoke about industrial automation. You are a industry man. A little, very briefly, some thoughts on industrial automation. What 5G can do to that? CP, are you there? CP, unmute. Are you there? So, Anuj, again, thank you for having me on this call. इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो आप एक कदम अगर पीछे हटके और ऑब्जर्व करें तो आज के जमाने में जहां ऑटोमेशन बढ़ा है वहीं एक तरह से देखा जाए तो बॉटलनेक्स भी सामने आए हैं. तो एक आप एग्जाम्पल अगर आप कोई भी लेना चाहें, अगर आपकी कपड़ाई की मिल है या आपकी कार की फैक्ट्री है या आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी है, आपका अंदर का ऑटोमेशन तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो चुका है. सबसे बड़ी दिक्कत जो कि लोगों ने नहीं रिजॉल्व की है वो ये है कि आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी इज रिलायंस. अगर आप रिलायंस में अंदर जाएं जामनगर में तो टोटल एक शिफ्ट में सिर्फ 160 आदमी काम कर रहे हैं. और अगर इसी रिफाइनरी के बाहर अगर आप जामनगर में खड़े हो तो आपको वहां पे 5000 ट्रक दिखते हैं. नाउ व्हाट डज इट शो? It just shows is कि automation inside does not mean efficiency outside. Whereas you as a consumer, आप चाहते हैं कि आपको जो पेट्रोल, डीजल या जो भी है वो predictably least amount of logistics costs के साथ आपको मिल जाए. तो supply chain का automation, inventory control का automation और एक तरह से देखा जाए तो एक नई जो एक जागरूकता आई है वो जागरूकता है सस्टेनेबिलिटी की. इसका मतलब ये है कि आप कितना कार्बन खर्च रहे हैं और ये आप किस तरीके से, न तो किसी भी ऑटो इंडस्ट्री के पास में आज कोई टूल है कि वो रियल टाइम में बता सके कि वो कितना कार्बन खर्च कर रहा है. That means आपको कितना पोल्यूट कर रहा है, नंबर 1. नंबर 2 इज कि ये जो सप्लाई चेन है अगर इसके अंदर मैं मॉडर्नाइजेशन ले आऊं, मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगा? डेटा से. डेटा कैसे आएगा? जब आपका कनेक्टिविटी बेटर होगी. तो एक तरह से ये केवल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से ये फ्यूचर जनरेशंस को सेव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. बट टूल अपने आप कभी काम नहीं करता है, उसके ऊपर लोग, प्रोसेस और यूज केसेस, इसका मतलब सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं और वो जागरूकता मेरे ख्याल से अभी तक आई नहीं है. थैंक यू सीपी. ये जैसा कि सीपी ने बताया कि जागरूकता लाना की आवश्यकता है और ये जो ऑटोमेशन इनसाइड है, जो आपके अंदर के सिस्टम्स में ऑटोमेशन है, वो बाहर किस प्रकार से एफिशिएंसी बढ़ रही है उसके लिए कोई गारंटी नहीं देता है. तो इसलिए तमाम चीजों में हर एक स्टेक होल्डर का ऑटोमेशन होना आवश्यक है. थैंक यू सीपी फॉर दैट. डॉक्टर सेंदिल, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग. या Yes. Yeah, thanks. I think very interesting point. One, just having access to broadband is not important. We are also saying कि how do we make small connectivity, local connectivity को एक specific application दिया जाए, right? For example, आज अगर Wi-Fi hotspot ले आते हैं, we get a smart bulb connected, it gets connected and works. But can we do the same thing at large scale? जैसे मारुति का factory है, or in a hospital where
like Dr. Kapoor said, we are connected to the patients, but can also give access to the machines, X-ray machines and other things somewhere, right, where the person does not have to go. Is there a portable hospital going into a village area, and then the medical equipments are already there? Doctor just connects it and gets it. So we are looking at, can 5G give that guaranteed pipeline to specific application? Because when you talk about mobile connectivity, the first thing people say is, "Arey, mera 4G ka call drop ho raha hai," and you're talking about these high-end applications. So 5G is fundamentally built so that an operator or network can say, this exact equipment that is connected need to be guaranteed to this much latency or this much speed consistently. So that kind of end-to-end guaranteed service 5G ke saath kar sakte hain. And that is what is needed, where different organizations, health sector, manufacturing, come together and say, we want to adopt wireless connectivity. And that's called private network in the technical terms. And defense is also not out of that scope, right? Even defense can think about using their own network within the campus, or wherever they go, they can set up their own standalone 5G network in dedicated spectrum where they're trying to do it. So I think that's evolving over different places. How do we have a private wireless connectivity, not just wireless Wi-Fi based connectivity wherever they go? And that's evolving. Dr. Sendil, thank you very much. बहुत आपने बिल्कुल सही तरीके से ये बताया. हमारे पास कुछ questions आ रहे हैं. And why I am saying those questions, हमारे पास viewers के questions हैं. और ये question जो आप बात कर रहे थे Dr. Sendil, उसी से मेरे ख्याल से ताल्लुक रखता है. It's connected to that. So I will put that question to you. There's a question that what is the impact of 5G going to be on radars of military band? Would you be able to handle it, or should I go to Vikram for that? Yeah, I can. I did. Sendil, yeah, I already answered on the chat, but I can repeat it here. Yes. Right. So I think radar, typically when we read, it sends a very high power signal, it hits it, and then it comes back and we say how far the object is, right? So we use radar in different scale. One, it could be military trying to see how far is a plane flying above, maybe from adjacent country, or we can use radars in our cars, which says how close my other cars are, and accordingly I can change the lanes, or I can apply brake or reduce my speed of the vehicle because aage wala gaadi itne hi meters ke aage hai. So different radars have different power levels. But when we talk about spectrum, there is a globally planned ITU activity which says that ये वाला portion हम इस services के लिए use करेंगे, ये वाला spectrum इस services के लिए use करेंगे. That's the reason you buy any Wi-Fi hotspot or a phone. When you say Wi-Fi, globally wherever you go, it operates. It's in the same 2.4 gigahertz band. उसी तरह से radar के लिए भी ऐसे अलग-अलग spectrum bands identify किया गया. And if we talk about, I think the question was about radar. So radars also operate in 33 to 3400 band. Yeah. So those radars are specifically for very high power transmission. It could be like 100 kilometer दूर तक hit करके वापस आ सकता है. जबकि 5G stations are transmitting at very smaller power. So it is actually not the radar which will get impacted. It's the 5G base stations and the mobiles which will get impacted if they are transmitting on the same frequency. Okay. So 5G is not going to impact radars. Okay. Thank you very much. 5G is not going to impact radars. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. लेकिन ये इसका जो military concerns हैं, कोई भी चीज हम जब उसको बिग वे में लेके आते हैं तो military concerns have to be addressed, and I am sure ये हो रहा है. 2-3 सवाल चाइनीज वेंडर्स की प्रेजेंस के बारे में है, तो उन तीनों सवालों को मैं कंबाइन करके आपको बताता हूं. एंड विक्रम, आई विल कम टू यू फॉर द आंसर टू दोस क्वेश्चंस. Question is, how is the percentage of Chinese vendors in 5G globally impact India's security concerns, especially with the proliferation of mobile networks into security domains? 1. 2. Which is the chief developer of software and hardware of 5G technology in India, and what is the share of China-based participation in Indian market? 2. And the third question is that percentage of 5G technology in India, what is the China-based participation again? And what is the wave emission impact on the flora and fauna diversity? So all this is concerning the Chinese presence in the 5G domain. Vikram, I'll get to you for that. Kindly answer that. All right, thanks. I noticed Mr. Lalji Prasad is quite has detailed questions and is quite involved in the discussion. So thanks, Lalji. It is nice, the more that we interact, it helps. So 3-4 things I'll say.
साइकिल पे लेके आता था वापस। CP, if you could mute yourself. Yeah. Okay. Go ahead. So here's what the ground reality is. Like globally, the patent filings for 5G, because the technology is based on the patent filings, right? So globally, the patent filings for 5G technologies, Chinese companies, Huawei and ZTE have a significant number of patents filing, right? But of course, companies, the Western companies like the one represented here, Ericsson and Nokia and Qualcomm and others, also have a substantial IP, filing. So, but the point is that whatever network equipment is deployed, it is deployed based on standards. So in this case, it is 3GPP standards. And it's a global partnership project where everybody, all these companies participate, and then a standard is made. So particularly last December, the government announced a thing called the National Directive for Security in Telecom, NDST, in which they have asked anybody deploying equipment in Indian telecom mobile networks as part of a license condition would first have to be certified by the government as a certified trusted source. Now, once the trusted source, which is the company, thereafter the trusted product. So there is a committee under the National Security Advisor, and which approves. So companies who are wanting to introduce a product in the networks, so this is already has been made a license condition, right? So it is up to the government to allow which company can provide you the equipment and which company can provide you its trusted products. Trust that should address the query specific to 5G, because 5G abhi launch hua nahi hai. It is going to be launched, right? So it will for specifically 5G aspects as they relate to this domain is how it is being managed in India. The second question is about who is manufacturing. Now, predominantly the manufacturers globally, OEMs are very limited for 5G products. So that is, Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, other major, Samsung as well, are the major OEMs who produce the radio network equipment. But software solutions, so that is where Open RAN has seen a lot of traction. That Open RAN has a potential for telecom service providers to choose and disaggregate the radio equipment, right? It's a little more complex, but what I would, request Mr. Lalji is to read up about Open RAN a little bit, right? On flora and fauna, so I mentioned the WHO fact sheet, and there is ICNIRP 2020 has studied all this, and globally, telecom service providers are following the ICNIRP 2020 guidelines. I think Colonel Ram Athavale also asked about the exposure part, that is addressed there. So that is as far as these questions go, Anuj. Okay, thank you very much, Vikram. जैसा आपने बताया कि it's a concern. The Chinese presence in the domain has security implications. लेकिन वो जो security implications हैं, उनको भारत सरकार बिल्कुल सही प्रकार से लाइसेंसिंग के जरिए और अन्य तरीकों से उनको ठीक से कवर करने का प्रयास कर रही है. और I think we should be absolutely okay with that. Dr. Sendil, you were wanting to say something, yeah? Before I come back for the last comments, and a few more questions are there. Yeah, Dr. Sendil, please. Yeah, thanks. I think I just wanted to add a few things on, because I've been in the standard space, right? So when we say 5G, it's not just one radio or one phone. There are a lot of stack which is involved, right? So I can say radio transmits from here to here. From here to the network, there are a lot of components. There is a core network. There is multiple things.
So everything is standardized and specified. Every interface, radio se agar voice jata hai, to first thing kya hona chahiye? What encoder it has to do? How do I encrypt between the mobile to this? So everything is specified in the standard. But then it is up to the one who is deploying it. If I buy, say for example, you have a big society of 1,000 houses and you want to put 100 Wi-Fi hotspots so that everyone in the house or everyone in the society just moves around, he connects to any Wi-Fi hotspot. If someone thinks, oh, how will I go and connect and set the admin password of all the router to be unique, right? And say, yaar, koi common password rakh do, admin 123. Now, when you buy such products, no doubt we are not manufacturing it. We might import it, white label routers, put some name and put it in the entire society. Now, it's not the problem of the software or a hardware security issue. It's about how do you configure it. If I just keep one password for all the routers in the house or in that public places, it's a security issue. So that kind of important step is where regulator steps in, government steps in, right? If I'm saying there is an IoT device which is sold white label devices in bulk, they all need to ensure that there is no this kind of a common passwords or unique passwords set across all devices. That kind of measures is important when you talk about ensuring cyber security or 5G in public utilities and everything. Those are important aspects, not where it is made. Yes. Thank you very much, Dr. Sendil. It's all right because, normal tendency is that, the Chinese are producing this equipment. So there may be something that they may be able to do it. So that is why it is important to talk to people like you and have this session. And one last question of the session, and then I'll come back to you for your last comment, final comments. This is from Ram Atavle. How vulnerable is 5G to the cyber interference and hacking? I'll get to Bharat Gupta. I'll get to you. Can you take this question on? How vulnerable is 5G to cyber interference and hacking? Can we ensure secure, uninterrupted 5G for business continuity, medical support, and defense needs? Bharat. Yeah, General Mathur, a simple answer to this question. Security is inherent as part of the 5G architecture. So, rest be assured, I would not go delve into the technicalities of it as to what happens in the AMF, how the SDF is defined, how does it function. Needless to say, in a simple terms, 5G जो है वो security जो है 5G के अंदर inherently अपने आप built up है. So उसमें कोई हमें स्पेशल चीज या स्पेशल चीजें लगाने की जरूरत नहीं है. इट इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द सर्विसेज इटसेल्फ. ओके भरत, मैं क्या इस बात को समझूं कि 5G जो है वो इंटरफेरेंस और हैकिंग के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल नहीं है. जहां तक प्रश्न हैकिंग का है तो कोई ना कोई तरीका कोई ना कोई निकाल ही लेगा, लेकिन वल्नरेबिलिटी जो है 5G की वो हैकिंग के लिए उतनी ज्यादा नहीं है और इट इज वेरी सेफ. और इसके क्या डिफेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं वो इनबिल्ट हैं और वो सब देखे हुए हैं. लेट अस नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज एज लॉन्ग एज जैसे कि हमको आंसर इसका मिल गया है. नाउ आई विल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू वन बाय वन फॉर योर फाइनल कमेंट्स. विक्रम. Essentially what finally I'll say is, as CP mentioned, there is a need to have a digital readiness index of different verticals. Because if you want to apply 5G to sewage treatment management, data on sewage should be available. Like he said, that if there were those 3,000 trucks hanging around outside the complex, so the data on the truckers and what they do, unless you have the data which is put. So in short, we had recommended even to the Parliamentary Standing Committee on IT that there be a digital readiness index of different verticals, so that their governing ministries, whether it's the health ministry or the rural ministry or the logistics or heavy industries, they encourage the data digitization of their respective verticals, because then they will be able to utilize the 5G applications. Thank you. Thank you. I think you've summed it up very nicely. Can we get to Dr. Sendil? Final words. Yeah, thanks. I think whenever there is something new coming, the first thing that comes is fear, right? People talk about EMF radiation, fear.
And what if automation comes in, will we lose the job? Right? I think we need to be prepared of adopting new technology coming. And then when we start saying industrial automation happens, or automated cars coming up, or say remote cranes to be operated, I think the fundamental is we also need to elevate our education level and skill level. So we can start using the technology and start something more to it. I think the fear of job loss because of automation, all those things, we need to overcome that. I think more government initiatives to digital education is important. Sendil, जैसा आपने बताया कि कोई नई चीज आती है उसके साथ डर आता है और डर से उबरने के लिए आपको अवेयरनेस, एजुकेशन और उसकी आवश्यकता पड़ती है और मेरे ख्याल से that will soon happen. Bharat, your last 4 thoughts. Yeah, couple of things. First is that India has done pretty well, and जो हमारा low mobility large cell का जो हमारा use case है, which that has been included by 3GPP. That's a very big thing to happen, and India has shown the world the way to go ahead. So 5G की जहाँ तक बात आती है, we are in a good position. Hopefully the government has shown the intent of rolling out robust infrastructure, चाहे वो गति शक्ति का प्रोग्राम हो, चाहे वो right of way के rules को और simplify करने की बात हो. So there is a lot of effort which is going on. There are a lot of positives which are there. We do have a very large, vibrant population in the country in the age bracket of 18 to 40. I mean, young population, and therefore the data consumption is going to be there for a very long time with us. India is definitely, moving very fast to become the $5 trillion economy, and 5G definitely would act as a catalyst in we reaching at that position. Thank you, Bharat. $5 trillion economy, 5G catalyst. मेरे ख्याल से इससे बेहतर समाप्त नहीं हो सकता था. ये बहुत आपने बढ़िया बात बताई है कि आपको अगर प्रोग्रेस करना है तो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट कटिंग एज वो आपको चाहिए और 5G मेरे ख्याल से उसको बनाने में. मुकुल, मेरी तरफ से I would like to say that 5G is going to get medical services closer to the patient. It will help in better management of chronic illnesses like diabetes, kidney diseases. It will lead to cheaper consultations, easier consultations, cheaper diagnostics, improve surgical quality, enhance record keeping of patients, early detection of diseases, and it will also bring in very good technology like what is called as telephone CPR, in which telephone से हम किसी का resuscitation में help कर सकते हैं just with showing videos to the person who's at the remote place. Absolutely, absolutely. And also, finally, it will enhance medical education by simulation. बहुत अच्छी बात बताई आपने. मेडिकल एजुकेशन सिमुलेशन, मेकिंग यूज ऑफ द एक्सपर्टीज सिटिंग फार एंड वाइड अवे. CP, your fine concluding remarks, please. CP, are you there? You're on mute. You're on mute. I don't see CP in the participants button. I think he may have left. Okay. So we'll get to CP later. Thank you very much, a wonderful panel for an outstanding disclosure of what 5G. आपने हमारे दर्शकों को 5G के बारे में साधारण भाषा में, आम समझने वाली भाषा में उसके बेनिफिट्स, उसके काम आने वाली चीजें और कैसे एक 5G भारतवर्ष में कनेक्टिविटी को और इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने वाला है, इसके लिए जो आपने बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. Unprecedented increase in the speed because of 5G. Very, very low, high top end speed upgrades, low latency, high bandwidth, and what have you. The 5G is going to revolutionize. 5G is going to impact every corner, every walk of your life, and government is doing adequately enough to create the ecosystem, create the infrastructure required
फॉर 5G। जो 5G आएगा तो उसको किस प्रकार से हम लोग उस 5G को इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके लिए जो इम्पेटस देने की आवश्यकता है, चाहे वो गति शक्ति हो, चाहे वो पर्वतमाला हो, और चाहे कुछ भी हो, कितने प्रकार से इस बारे को, इस चीज को समझा गया है हमारे द्वारा, हमारे पैनलिस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और सरकार के द्वारा। और सरकार और आपके ऑर्गेनाइजेशंस तमाम इस चीज में, इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और 15 अगस्त का हम इंतजार करें, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो 5G भारतवर्ष में लॉन्च होगा। आई थिंक दैट इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। और 5G जो है आपके जीवन को, आपके काम करने के तरीकों को, गेमर्स को, पिक्चर देखने के शौकीन लोगों को और इंडस्ट्री को, तमाम लोगों को एक बहुत जबरदस्त बूंद अमृत की तरह साबित होने वाला है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन विक्रम, मुकुल, भरत, Sendil, CP and everybody else. And a special thanks to my viewers for having spared the time and having been with us. Thank you very much. I'll be back on 27th of March with another exciting issue. Till then, good luck and best wishes. Go on, going on, everyone. If you've liked our program, don't forget to press the like button, subscribe to the channel, Metamorphs, and press the bell icon. Thank you very much on behalf of Metamorphs, all of you and my viewers. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Anuj. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Nice meeting everyone. Yeah, Bye bye. great. Enjoy.